जय जय हे। Jai Hind. Please be seated. A very good morning, everybody. Good morning. It gives me, Manasi, immense delight in extending a hearty welcome to all of you, especially the Honorable Union Minister, Shri Nitin Gadkari ji, all you esteemed guests, distinguished dignitaries, and invitees present in this historic, iconic, International Convention Hall of BSE. BSE के इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित सभी का मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूं। I request the Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, to kindly take his seat on the dais, along with Srimati Alka Upadhyay, Secretary, Ministry of Road Transport and Highways and Chairperson, NHAI, Shri Balasubramaniam Sriram, Chairman, Board of National Highways Infra Investment Managers Private Limited, Shri NRV VMK Rajendra Kumar, Member Finance NHAI, Shri SS Mundra, Chairman BSE, Shri J. Swaminathan, Managing Director, State Bank of India, Shri Padmanabhan Raja Jayashankar, Chairman and Managing Director, Indian Infrastructure Finance Company Limited, the IIFCL, Shri M.R. Kumar, Chairman, Life Insurance Corporation of India. A very warm and hearty welcome to all of you. We will now greet all the esteemed dignitaries and distinguished guests seated on the dais with bouquets of flowers. Ladies and gentlemen, if one takes into account the sheer magnitude of the cumulative infrastructure development work undertaken with the guidance of the Maverick Minister, Honorable Gadkari ji, it is nothing short of an infrastructure revolution. An unprecedented number of new expressways have been launched, whereas important highways whose construction had been stalled for years saw the light of the day in his tenure. Several two-lane highways are being converted into four-lane highways. The most ambitious highways development programs were launched under his leadership, with him at the helm. I will request you, sir, to kindly accept these bouquets of flowers. Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. इन फूलों का स्वीकार करें। Srimati Alka Upadhyay, Secretary, Ministry of Road Transport and Highways and Chairperson, National Highways Authority of India. A 1990 batch IAS officer, she has served in various positions in the government of Madhya Pradesh and government of India, including a tenure with Union Ministry of Rural Development. Welcome, ma'am. Shri Balasubramaniam Sriram, Chairman, Board of National Highways Infra Investment Managers Private Limited. Former MD and CEO of IDBI Bank Limited and a former MD of State Bank of India, he has over 37 years of experience in the field of banking and finance and is an independent director on the boards of ICICI Bank Limited, TVS Credit Suisse Credit Services Limited, Nippon Life India Asset Management Limited, IndiaIdeas.com Limited, and TVS Supply Chain Solutions Limited. Welcome to you, Mr. Sriram. Shri NRV VMK Rajendra Kumar, Member Finance NHAI. Prior to the National Highways Authority of India, he was the Chief General Manager in the Reserve Bank of India and worked in areas of public debt management, payment systems, currency management,
bank supervision, foreign exchange reserve management, and financial markets policy. Welcome to you, sir. Shri S.S. Mundra, Chairman, BSE. He is an ex-Deputy Governor of the Reserve Bank of India. Prior to that, he was a Chairman and Managing Director of Bank of Baroda. In a banking career spanning over 4 decades, he held several important positions, including that of the ED of Union Bank of India, Chief Executive of Bank of Baroda, European Operations, amongst others. Welcome, sir. Shri J. Swaminathan, Managing Director, State Bank of India. He handles corporate banking, CAG and CCG, and subsidiaries, CB and subsidiaries. Prior to his appointment as SBI's MD, he was Deputy Managing Director Finance at the bank, where he was overseeing budgeting, capital planning, the State Bank of India. He handles corporate banking, CAG and CCG, and subsidiaries, CB and subsidiaries. Prior to his appointment as SBI's MD, he was Deputy Managing Director Finance at the bank, where he was overseeing budgeting, capital planning, financial reporting, taxation, audit, economic research, investor relations, and secretarial compliance. Welcome to you, Mrs. Swaminathan. Shri Padmanabhan Raja Jayashankar, CMD, Indian Infrastructure Finance Company Limited. He possesses rich experience of over 32 years in development banking and financial domains, handling top management and board-level roles in the infrastructure, mortgage finance, and capital market sectors. Prior to IFCL, he was the Executive Director of National Housing Bank. He also served on the board of India Mortgage Credit Guarantee Corporation, the IMGC, and IFCI Factors Limited. Welcome to you, Mr. Jayashankar. Shri M.R. Kumar, Chairman, Life Insurance Corporation of India. In a career spanning more than 3.5 decades, he had the unique privilege of heading 3 zones of LIC of India, namely Southern Zone, North Central Zone, and Northern Zone, headquartered at Chennai, Kanpur, and Delhi, respectively. As an executive director, he headed the personal department as well as the pension and group insurance verticals of the corporation. Welcome to you, Mr. Kumar. और अब भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन होगा. In keeping with the Indian tradition, the function will be inaugurated by lighting the auspicious ceremonial lamp. I request the Honorable Union Minister, Shri Nitin Gadkari ji, to please do us the honors. I also request all the esteemed dignitaries and distinguished guests from the dais to kindly step near the lamp. दीपेन लोकान जयति दीपस्तेजो मयः स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्मात् दीप यजेत प्रिये. This couplet in Sanskrit translates, the lamp is luminous, its radiance grants victory, its light imparts dharma, artha, kama, and moksha, that is, righteousness, prosperity, pleasure, and finally, emancipation. This is the significance of life. And hence, a lamp should be lit. Lamp, as we know, is also a symbol of knowledge. जैसा कि हम जानते हैं, दीप ज्ञान का प्रतीक होता है. यादगार पल हम सभी के लिए. Moments to be treasured in the form of photographs. One nice group picture. The lamp being lit, the
Thank you so much. A very good morning to all of you. Honorable Shri Nitin Gadkari ji, Union Minister for Road Transport and Highways, Madam Alka Upadhyay, Secretary Morth and Chairperson NHAI, dignitaries on the dais, Shri Rajendra Kumar, Member Finance NHAI, Shri Mundra, Chairman BSE, Shri Swaminathan, Managing Director of SBI, Shri Jaishankar, CMD of IFCL, and Mr. Kumar, Chairman LIC, and all the distinguished audience that have gathered today. It is indeed my pleasure and privilege to welcome all of you to this momentous occasion of the ringing of the bell for the listing ceremony of the NHAI InvIT's NCDs. A very special and warm welcome to the Honorable Minister Ji, Shri Nitin Gadkari Ji, and Madam Chairperson of NHAI and other dignitaries on the dais and the audience who have taken their time out to be with us on this special occasion for all of us. Let me first of all congratulate and Mrs. Upadhyay for being elevated as the Secretary Morth. Our best wishes to her to take the Indian road sector along with the Honorable Minister to further newer heights. I also take this opportunity to thank Shri Girdhar Armane, the former Secretary, who has been with us in our road journey, this guidance and support over the last 2 years. Actually, it was exactly 2 years ago, on 27th of October 2020, when the board of the investment manager to the NHAI InvIT was reconstituted. And some of our original members, Mr. Roy, Mr. Sharma, and I, along with the MD, Mr. Suresh Goyal, joined on that very day. Since then, the journey of NHAI InvIT has been truly exceptional, with its mandate being assisting the NHAI to meet its ambitious asset monetization targets. It has never been a dull day. During this period, it actually operated like a startup, right from drafting of its corporate governance policies to getting some of the finest professionals on board, engaging with the best advisors and consultants, and most importantly, raising funds from marquee investors and institutions. And all this is now culminating in this tremendous success in its maiden listing of NCDs. During this period, it has received tremendous support from the Honorable Minister, Shri Gadkari Ji, who has always exhorted the InvIT team to enable participation by the common citizen of India so that they could be partners, made partners in the monetization of national assets. His vision of giving opportunity to an average Indian to benefit from returns offered by the relatively stable cash flows of InvIT was the driving force behind the current structure and the listing of and the successful listing of this InvIT's NCDs. After successfully raising funds last year for the first round of roads, the InvIT has now successfully completed its second round of fundraising. In this round, it has raised funds from unit holders, NCD investors, and banks to pay to NHAI a total concession fee of rupees 2,850 crores in respect of 3 roads that are being monetized. Before the launch of the public issue of NCDs, the InvIT had successfully raised rupees 1,430 crores by issuing of new units to institutional investors. The units were subscribed to in equal amount by the foreign and domestic investors alike. Clearly, the feather in the cap of the NHAI InvIT is today the public issue of NCDs of rupees 1,500 crores. And I would like to share some interesting nuggets of information with you about this public issue. Against the issue size of 750 crores, rupees 750 crores, and we had kept a green shoe option of another rupees 750 crores, bids of around 5,000 crores were received on the first day itself. Over 13,000 bids were received from across the country, of which close to 12,500 bids were received in the retail category, that is investors with bids of up to rupees 10 lakhs. Technically, the issue was oversubscribed by over 6.5 times in the first day itself. Here, obviously, we'd like to acknowledge the vision of the Honorable Minister
to enable the common citizen to participate in the NHI InvIT, and which has been truly achieved. The issuance had many firsts, but the most notable was the long-dated tenor of the instruments and the structure of the instrument, which were both tested out for the first time after many years, and which was carved out and structured to fit an escalating infrastructure financing requirement. I wish to thank all investors personally and on behalf of the InvIT's board for their confidence in the proposition. This would hopefully be a precursor to the beginning of an active market for long-dated debt instruments in India. Hopefully, the success of this issuance could go a long way to create an alternative to the traditional methods of financing infrastructure in the country as well. I would also like to acknowledge the supervision and guidance that we received from SEBI, the capital markets regulator. Through their support in evolving guidelines and framework, we have been able to launch the first follow-on issue by a private listed InvIT, followed by this NCD issue. There have been a lot of people and organizations who rose to the challenge and worked seamlessly as a team to ensure this. And I emphasize the word team here because it will really work like a dream team. Firstly, I would like to thank the BSE and the entire team who worked through the Diwali holidays and to ensure timely listing of the NCDs. I would also like to thank NSE, registrars, K-Fintech, the debenture trustee, SBI CAPS trusteeship, the lead managers, JM Finance as the left lead, AK Capital, and Trust for Capital, who stood by the issue in the initial periods of uncertainty, and SBI CAPS and ICICI Securities for their tremendous support and reach. A special word of thanks to the legal advisors, Cyril Amarchand Mangaldas, J. Sagar Associates, and all the other advisors, all of whom had to spend sleepless nights to push through and ensure the success of both the units issue as well as the NCD issue. I would like to acknowledge the support received from the existing bankers, State Bank of India, Axis Bank, Bank of Maharashtra, who ensured an exemplary turnaround with all the assistance required and when required. A very special word of thanks to our sponsor, NHI, especially Chairperson Srimati Upadhyay and Member Finance Rajendra Kumar, who supported the entire process and personally stepped in to support the entire fundraising. No degree of financial engineering will work or will help unless investors are willing to back it up with their risk capital. And here are investors, including a CPP Investment Board, Ontario Teachers Pension Plan, and the SBI Group, and many others who have invested in the InvIT. I think I really thank them for backing us with both their capital as well as their invaluable support in this journey. I would reserve the biggest hurrah for the InvIT's management team, which worked through long hours for months together. They have demonstrated unmatched passion, ambition, and energy in the process, which are key to achieving something like this. To build a full-fledged organization, raise funds twice, and achieve listing of NCDs, all within 2 years of their existence. Finally, I would like to again thank the Honorable Minister, Shri Gadkari ji, Madam Chairperson, other dignitaries on the dais, and all of you distinguished audience. I wish all of you the very best and many more successes for the InvIT and for the road sector at large. Thank you very much and good day to all of you. Thank you, Mr. Sriram, for the initial remarks. Ladies and gentlemen, I will divert your attention to the screen now as we are playing a video on BSE. The history of BSE is the history of India from a capital market perspective. Founded in 1875, BSE and the many men who founded the exchange took the torch forward and built it into the premier institution that it is today. The passing of the Companies Act 1850 paved the way for stock trading in India. But companies were few and people did not really have large investable funds for trading in stocks, broker receipts,
and there was no trading hall or stock exchange building. And whatever little trading that took place was carried out in the open under the banyan tree. The American Civil War changed everything. An acute global shortage of cotton forced the mills in Lancashire to source cotton from all over the world, including India. As cotton was exported in large quantities, its price soared. An unusual influx of wealth in the form of bullion amounting to 850 million rupees landed on the beckoning shores of Bombay. Premchand Roychand, who by virtue of being the first Indian broker to read and write English, found himself eminently suited to lead the equities market in Bombay to a new level. He floated or helped float several companies which sought equity investments. Men from all walks of life were participating in the share market. Sri Chunilal Motilal was the first president of the BSE. He saw the exchange through its most embryonic phase. Sri Shapurji Brocha succeeded him and was responsible for setting up rules and regulations of the exchange. Sri K.R.P. Shroff rose from being a teacher to the presidentship of the BSE. Sri Firoz Jijibhoy played a stellar role in molding the Bombay Stock Exchange to its present stages. He was instrumental in developing the Indian stock market in general and BSE in particular. It was to commemorate his contributions, first as secretary of the BSE and later as a chairman, that the present stock exchange building was named after him. BSE has reinvented itself completely over the last decade. Professionals now run the exchange, and as per regulatory restrictions, brokers are no longer on the board. The transformation from floor-based physical trading to screen-based electronic trading and now mobile trading has been phenomenal. And in the process, there has been continuum. BSE offers a full bouquet of financial products, including equity, equity derivatives, currency derivatives, commodity derivatives, interest rate derivatives, debt products, security lending and borrowing platform, IPO, SME platform, mutual funds, ETFs, offer for buy and offer to sell. BSE has diversified into newer segments like insurance distribution, power exchange, electronic platform for spot agricultural products, and administration and supervision of investment advisors. BSE also provides a host of other services to capital market participants, including risk management, clearing, settlement, market data services, technology, and education. Today, BSE is the fastest exchange in the world and the largest in terms of listed entities. It is the leading currency derivatives exchange in India. The SME platform, BSE SME, is the largest in the country, and so is its mutual fund distribution platform. It is also India's second largest commodities exchange. BSE, experience the new. That, ladies and gentlemen, was BSE's glorious journey, right from its establishment to all its accomplishments, major milestones along the way. Today, we all have gathered for the listing of National Highways Infrastructure Trust NCDs on the exchanges. And listings are milestones. Milestones are ways of looking at the past with gratitude, present with appreciation, and future with lots and lots of hope. Ladies and gentlemen, the momentous time for which we all are eagerly waiting is fast approaching. 9:15 sharp, we will ring the gong, which will mark a new milestone in the history of National Highways Infrastructure Trust NCDs. देवी और सज्जनों, जिस पल की हमें प्रतीक्षा थी, वो करीब आ रहा है. You all are requested to join me in cheering when the customary 10-second countdown to 9:15 begins.
We all will put our hands together as the timer will strike 9:15. देवी और सज्जनों, जब 9:15 को 10 सेकंड बाकी होंगे, आप सभी मेरे साथ काउंटडाउन की गिनती में शामिल हो जाइएगा। तालियों की गूंज के साथ हम उस पल को सजाएंगे। And I will now request the Honorable Union Minister, Shri Nitin Gadkari ji, along with all the esteemed dignitaries and distinguished guests seated on the dais, to please proceed to the left of the stage where the gong has been placed. Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. I will request all the photographers and videographers who are near the gong stage to kindly kneel down. As we all know, this event is being live telecast across various platforms. So the videographers, press, media, who is standing at the rear end of this hall, the view is being obstructed. जो फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स गॉन्ग स्टेज के करीब हैं, उन सभी से दरख्वास्त है, आप कृपया थोड़े से झुक जाइएगा। ये इवेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हम सभी को पता है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो प्रेस मीडिया पीछे खड़ी है। शुक्रिया, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Along with the Honorable Union Minister, Shri Nitin Gadkari ji, we have Srimati Alka Upadhyay, Secretary, Ministry of Road Transport and Highways and Chairperson, National Highways Authority of India, Shri Balasubramaniam Shri Ram, Chairman, Board of National Highways Intra Investment Managers Private Limited, Shri NRB VMK Rajendra Kumar, Member Finance NHAI, Shri S.S. Mundra, Chairman BSE, Shri J. Swaminathan, Managing Director, State Bank of India, Shri Padmanabhan Raja Jaishankar, CMD, IIFL, Shri M.R. Kumar, Chairman, Life Insurance Corporation of India. As you can see, we are 2 minutes away from 9:15. And the clock is ticking very, very fast. You can see on the screen, we have senior officials from BSE gathered near the stage, less than a minute away. The excitement in the air is very, very high. And as you can see on the big screen, it is half a minute to 9:15. We all are in readiness. 20 seconds to go. And the countdown will begin shortly. There we are. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heartiest congratulations. Congratulations once again to the sponsors, management, investors, stakeholders of NHIT. ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।
Thank you. The National Highway Infra Trust has been listed. You may please take your seats, ladies and gentlemen. It is our good fortune, ladies and gentlemen, and a proud privilege to have as our chief guest Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. With great pleasure, I invite him to address this august gathering on this highly joyous and equally significant occasion. Our Secretary and Chairman for NHI, Srimati Alka Upadhyay, Sri B. Sriram, Chairman National Highway Infra Investment Managers Private Limited, Sri Rajendra Kumar, Member Finance NHI, Sri S.S. Mundra, Chairman Bombay Stock Exchange, Sri J. Swaminathan, MD State Bank of India, Sri P.R. Jaishankar, CMD IHFCL, Indian Infra Finance Company Limited, Sri M.R. Kumar, Chairman LIC, मंच पर सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी, विशेष रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले सभी इमिनेंट गेस्ट और भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे इनविट को जो रिस्पांस हमारे इन्वेस्टर ने दिया है, रिटेल इन्वेस्टर ने दिया है, इंस्टीट्यूशन ने दिया है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभेच्छाएं देता हूं। ये जो इन्वेस्ट का जो हमारा पहला ये प्रयोग था, उसमें रिटेल लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश हमने की। बहुत प्रयास ये चल रहा था कि हम बड़े प्रमाण पर हमारे देश में जो रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, जो सैलरी कमाते हैं, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा अवसर दें। इसके बारे में जो एक्सपर्ट लोग थे उनका उतना विश्वास नहीं था, पर मुझे बहुत खुशी है कि 10 दिन की मुदत इनविट के लिए थी, पर केवल 7 घंटे में जो अमाउंट हमको चाहिए थी उससे 7 टाइम्स ज़्यादा रिस्पांस हमको लोगों से मिला है। सुबह 9 से 4 तक ये 7 टाइम्स रिस्पांस देना ही एनएचआई की क्रेडिबिलिटी को मजबूत करता है। एनएचआई AAA रेटिंग है और स्वाभाविक रूप से ये जो विश्वास एक प्रकार से एनएचआई पर व्यक्त किया गया है, ये इनविट के माध्यम से, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए मैं हमारे एनएचआई की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय, हमारे फाइनेंस मेंबर राजेंद्र कुमार, हमारे इनविट के जो चेयरमैन हैं मिस्टर श्रीराम, और इसके साथ साथ इसमें जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ऐसे श्री गोयल और उनके पूरे टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आज यहां आते हुए 2 घटनाओं की मुझे याद हो रही है। पहली घटना ये थी जब मैं मुंबई में मंत्री था 97 में, तब महाराष्ट्र राज्य MSRDC स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना मैंने की थी, और मैं और हमारे MD RC सिन्हा यहाँ इन्वेस्टमेंट मिलाने के लिए इसी स्टॉक एक्सचेंज में आए थे। तब मुझे याद है कि धीरू भाई अंबानी जी मुझे बहुत प्रेम करते थे, और जब मैंने उनको बताया कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे प्रेम के भाव से कहा, नितिन आपको कौन पैसा देगा। और हमने बहुत कोशिश की, बहुत प्रेजेंटेशन हुए, काफी लोगों को मिले, और जब हमारी क्रेडिबिलिटी आज की तुलना में तो कुछ भी नहीं थी, बहुत ही कम थी,
फिर भी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट के लिए हम पहली बार 500 करोड़ के लिए बॉन्ड इशू लेकर आए थे 97 में। हमको 1250 करोड़ रुपए मिले, ओवर सब्सक्राइब हुआ। और दूसरी बार जब हम लोग 850 करोड़ के लिए आए तो हमको 1500 करोड़ रुपए मिले। और इस अनुभव ने काफी कुछ सिखाया। और आज तो NHI AAA रेटिंग है और एक सक्सेस स्टोरी बन गई है। दूसरी घटना जो यहाँ हुई थी वो भी मुझे याद है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन साहब यहाँ आए थे और उनका सत्कार हुआ था। और मैं उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में। और कार्यक्रम में धीरू भाई अंबानी जी थे, प्रमोद महाजन थे। बहुत अच्छा सिलेक्टेड कार्यक्रम यहाँ हुआ था। और कार्यक्रम के बाद धीरू भाई अंबानी ने मुझे आवाज देकर बुलाया और अंदर रूम में क्लिंटन साहब के साथ लेके गए और उन्होंने मेरा परिचय करके दिया और उनको कहा कि आप जब एयरपोर्ट से आ रहे थे जितने फ्लाईओवर बने हैं इस हमारे लड़के ने बनाए। तो मुझे उनका काफी प्रेम मिला। और एक बात ये भी याद आई कि रतन टाटा और धीरू भाई दोनों ने मुझे कहा था कि आप हमसे भी होशियार निकले कि ताकि आपको बॉन्ड में पैसे मिले। गवर्नमेंट में बॉन्ड में पैसे मिलाने के बारे में काफी लोगों के मन में संभ्रमित अवस्था है, पर NHI जो काम कर रही है या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सक्सेस स्टोरी है, इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है और इसीलिए हमारा टोल का इनकम भी काफी बड़ा है और हम प्रोजेक्ट को मोनेटाइज भी कर रहे हैं। मुझे एक बहुत अच्छी बात अभी हुई है कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी सोमनाथन जो है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सब मंत्रिमंडल के सामने एक बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति और भविष्य की नीति के बारे में एक विजन रखा। और उसमें उन्होंने एक अच्छी बात रखी कि हमारे देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसमें से अनेक प्रोजेक्ट ऐसे जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है। और इसलिए गवर्नमेंट बजट के साथ हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट PPP मोड में हम उसमें लाकर एक नए इनिशिएटिव लेकर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। उनने ये बहुत सही बात कही है क्योंकि देश में प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मनिर्भर भारत की। और इसलिए मैं तो अक्सर यूपी और बिहार में भी ये कह चुका हूं कि 24 एंड होने के पहले यूपी और बिहार को भी अमेरिका के स्टैंडर्ड के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना कर देंगे, इतना हमने संकल्प किया है। तो इसके लिए बहुत पैसा लगने वाला है। और मैं सबसे पहले आपको इन्वेस्टर्स को ये एश्योर करना चाहूंगा कि ये कोई देश हित के लिए, एक सेवा के लिए ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो है ही। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि ये इकोनॉमिक वायबिलिटी के आधार पर ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे नहीं। इतना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इतना अच्छा है कि इसमें इन्वेस्ट करना 100% सिक्योरिटी है और इसमें आप जरूर इन्वेस्ट करिए। देश का भी निर्माण होगा और आपको भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसी बात का आग्रह से आपके सामने कहना चाहता हूं। मैं अभी हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन साहब को बता रहा था कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो हाइब्रिड एन्युटी में मथुरा का 80 mld स्लज यानी सबसे गंदा पानी, उसको शुद्ध करने का हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट हमने लिया। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। इसमें मथुरा के रेलवे लाइन के बाजू में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है और प्रोजेक्ट मैंने ही विजुअलाइज किया था, काफी लोगों को डाउट था। प्रोजेक्ट ये था कि ये 80 mld स्लज को हम शुद्ध करके इसमें पानी निकालेंगे और वो पानी इंडियन ऑयल को यूज करने के लिए देंगे। और इंडियन ऑयल जो पानी उत्तर प्रदेश की सरकार से लेता था उसको 25-30 करोड़ साल के देने पड़ते थे। इंडियन ऑयल, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और जो हमारे इन्वेस्टर आए थे त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उनके बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ। प्रोजेक्ट पूरा हुआ, इंडियन ऑयल को पानी मिला, 20 करोड़ रुपए साल के वो पानी के दे रहे हैं और वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, वो सक्सेसफुल हुआ। इसलिए केवल रोड में ही नहीं तो
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी इकोनॉमिक वायबिलिटी है. नो वन इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate technology and appropriate leadership that you can convert waste into wealth. और मैं बहुत आग्रही दो बातें अक्सर लोगों को कहता हूं. दूसरी है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth and conversion of waste into wealth. और इसमें आपका सहयोग चाहिए. मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं. मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली कार दिल्ली में है. 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स इंजन की कार भी है. और मेरा सपना है कि 16 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का है और उसमें हमारा पूरी तरह से प्रदूषण भी होता है. और मैं चाहता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बने. तो ये जो सीवेज वाटर है वो किसान के खेत में कुएं में पानी है वो उसी से हम ग्रीन हाइड्रोजन मिला सकते हैं. और ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइजर हमारे देश में, वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. और वो इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 1.25 करोड़ का है. उसी से हाइड्रोजन निकलेगा. और अभी 100% इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट भी हमने लिया है और उसी से हम 500 बार तक उसको कंप्रेस करके ट्रक, बस में, इंडस्ट्री में, हवाई जहाज में, रेलवे में कहीं भी फ्यूल करके यूज करेंगे तो हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, निर्यात करने वाला बनेगा. और इसलिए मैं आपको यही प्रार्थना करूंगा कि आप बाकी प्राइवेट कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करिए, पर इसके साथ साथ इसमें देश का हित भी होगा और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे. ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें भी आप जरूर प्राथमिकता दीजिए. यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा. मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जब पहली बार हमको मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग के प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर के लिए पैसे दिए थे, हमने सब पैसे वापस कर दिए. और मैं तो दिल्ली चला गया, पर अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो 1650 करोड़ में हमने बनाया था वो बाद में महाराष्ट्र सरकार ने भी 1.5 साल पहले 8000 करोड़ रुपए में अगले 10-15 साल के लिए बेच दिया. वो एक्चुअली नेशनल हाईवे भी हमने उसके साथ उनको जोड़ के दिया था. इसका मतलब ये केवल कमाई और बढ़ाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है. हिंदुस्तान के 2 बातों में रिकॉर्ड है, पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ. दोनों में बहुत स्पीड से काम होता है और इसलिए इकोनॉमिक वायबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसलिए आने वाले समय में मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम लोग काफी लोगों को अब निराश करना पड़ रहा है जिन्होंने अपने इनविट में पार्टिसिपेशन किया है. पर हम जल्दी ही और प्रोजेक्ट निकालेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो निश्चित रूप से छोटे छोटे लोग जो सैलरी कमाते हैं, महीने में रिटायर्ड हुए हैं, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट को उनको हम 8% तक रिटर्न दे रहे हैं. और ये भी सुविधा है कि अगर वो चाहते तो रिटर्न उनको मंथली मिल सकता है. तो मुझे लगता है कि इतना रिटर्न तो कहीं मिलता ही नहीं. तो निश्चित रूप से रिटायर्ड लोगों के लिए, जैसे हमारे सिक्योरिटी के कर्मचारी होते हैं, हमारे छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, उनको रिटायर्ड होने के बाद इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा. और इसके लिए जो रिस्पांस मिला है उसके लिए निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूं. और जल्दी ही अब इनविट में और प्रोजेक्ट लेकर हम आएंगे. हमारे पास प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है. हम 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और अभी मुंबई से आज नरीमन पॉइंट में मैं हूं और यही सपना था कि नरीमन पॉइंट से दिल्ली में 12 घंटे में पहुंचना है. और इसलिए ये जो हमारा नया कोस्टल मार्ग बन रहा है इसमें महाराष्ट्र सरकार से मेरी बात हुई है कि अभी हमारा जो दिल्ली से मुंबई JNPT तक हाईवे है वो 70% पूरा हुआ है. 1 लाख करोड़ रुपए हम उस पर खर्चा कर रहे हैं. और ये जो हाईवे है ये हम लोग ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट आगे वसई विरार से लेकर उसको हम एक 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट समुद्र में ही करके डायरेक्ट एक्सप्रेस हमारे दिल्ली मुंबई हाईवे को जोड़ देंगे तो 12 घंटे में नरीमन पॉइंट से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी हम आपके पास जरूर आएंगे. ये सब प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है. अभी हम काफी ग्रीन हाईवे बना रहे हैं. दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में,
दिल्ली से जयपुर 2-2.25 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर केवल 2 घंटे में, और कानपुर से हमारे लखनऊ को केवल आधा घंटे में पहुंचने के रोड हम बना रहे हैं। ऐसे और भी रोड है, तो ये सब ग्रीन हाईवे भी बना रहे हैं और उसमें ट्रैफिक तो अच्छा ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप सबका सहयोग मिलेगा। और एक मैं आपको रिक्वेस्ट करना इस उम्मीद करूंगा कि अभी मुंबई में मैं अभी एक 25-30 दिन पहले आया था बेस्ट के कार्यक्रम के लिए, तब मैंने इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च की, और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, इसके लिए आपको अनुरोध कर रहा हूं कि मुंबई में जो बेस्ट की बस चलती है डीजल पर, वो 1 किलोमीटर का खर्चा 115 रुपए है, और अभी हम 5,500 इलेक्ट्रिक बसेस ले रहे हैं और उसका टेंडर भी फाइनल हुआ है। तो इलेक्ट्रिक की बस, नॉन एसी बस केवल 39 रुपीज पर किलोमीटर चल रही है, और एसी बस 41 रुपीज पर किलोमीटर चल रही है। यानी आप समझो कितनी वायबिलिटी है। और डीजल में चोरी हो सकती है, टिकट देने में चोरी हो सकती है, अब यहाँ कुछ चोरी नहीं, कार्ड के ऊपर है, मोबाइल फोन के ऊपर। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मैं इसका मंत्री हूँ। अभी हमारे यहाँ 1.5 लाख बसेस डीजल पर चलने वाली है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना है। तो आने वाले समय में हम लोग 10 लाख बसेस, एयर कंडीशन डबल डेकर बसेस जैसे यूरोप में है, वो सब जगह अच्छी अच्छी बसेस कर सकते, इतना पोटेंशियल है। तो इसमें भी आप हमें जरूर सहयोग करिए। हम लोग 260 NHI में हमने कंपनी बनाई है, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। अभी मैं लद्दाख और लेह में 1200 करोड़ रुपए के ये पहाड़ पर चढ़ने के लिए फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूं, और इंडियन टेक्नोलॉजी को इनकरेज कर रहा हूं। यही अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हम 16 रोपवे बना रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं कि ये सब प्रॉफिटेबल है, इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है। हम बस पोर्ट बनाना चाहते हैं, 500 बस पोर्ट देश में, जो एयरपोर्ट जैसे है। उसके साथ साथ हम लोग 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, और काफी अच्छे उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और काफी मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। केवल मुंबई को देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है BPT के पास, जिसको मुंबई के लिए आप जरूर रिस्पॉन्स दीजिए कि नया एयरपोर्ट जो बन रहा है, मुंबई के किसी भी दिशा से केवल 17 मिनट में हम वाटर टैक्सी से नए एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और ये 5,000 टैक्सी पानी में चलेगी। तो ये बहुत इकोनॉमिकली फायदे का काम होगा, जिससे ट्रैफिक रोड का भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा, और इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा। तो ऐसे बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के है, जिसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, और जो इन्वेस्ट कर सकता है उसको अच्छा पैसा मिल सकता है, देश का भी निर्माण होगा। और निश्चित रूप से आपके सहयोग से हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार के बजट से तो मिलेगी ही, पर इसके अलावा आप जैसे लोगों के सहयोग से अगर ये पैसा मिलेगा तो ये ग्रोथ रेट और बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारा देश दुनिया की इकोनॉमी में अग्रस्थान पर पहुंचेगा, और उसके साथ साथ आपके रिटर्न्स का भी आपको अच्छा फायदा भी मिलेगा। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सभी इन्वेस्टर यहाँ हैं, और इस कार्यक्रम के निमित्त NHI तो AAA रेटिंग है, NHI में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कभी कभी NHI को गोल्ड माइन कहता हूँ, इतना अच्छा है NHI का रिकॉर्ड है। और अभी हम लोग, आपको पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास काम करने की स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि हमारे लोगों ने एक टीम वर्क में काम करके इस साल हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 6, जो आज हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में हमने बनाए, कंक्रीट में हो, बिटुमेन रोड में हो, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर्स बने, काफी डबल डेकर बना रहे हैं, अभी 3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहे हैं। एक प्रकार से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लगातार काफी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में काम करने के लिए हमने NHI DCL इस कंपनी की भी स्थापना की है। हम लोग आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला, कारगिल के नीचे, वो बना रहे हैं, और आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इसका 4 बार टेंडर निकला।
और हमने 1 साल मेहनत की और इसमें एस्टिमेट कॉस्ट जो 12,000 करोड़ थी, हमने 5,000 करोड़ रुपए बचाए और पहली बार वो टनल का काम अब 45-50% हुआ है। 1.5 साल में वो पूरी होगी। इसके साथ साथ काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट NHIDCL भी कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। अभी तक उनको तो हम कैपिटल मार्केट में नहीं आए, पर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी भारत सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने 2 लाख करोड़ का बजट हमको दिया है और ऊपर से आप सब लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा बनेगा ही, और उसके साथ साथ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप जरूर सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। NHI की चेयरमैन और उनकी टीम, हमारे इनविट के चेयरमैन, उनकी टीम और विशेष रूप से हमारे गोयल, अभी उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। अभी मैं मैक्वेरी गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के ऑफिस में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो कह रहे थे कि हम लोग हिंदुस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा कि आपका बिल्कुल स्वागत है, जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी इन्वेस्टमेंट में स्वागत है, पर मैंने उनको ये भी बताया कि उसके साथ साथ हिंदुस्तान के छोटे लोगों की भी इन्वेस्टमेंट हम प्रायोरिटी पर लेना चाहते हैं। हम देश की जनता की इन्वेस्टमेंट के आधार पर देश का निर्माण करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि दिस इज रियली ए गुड हिस्टोरिकल स्टार्ट। दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू NHI, but this is important for our Indian economy. The first time the investor has got a lot of belief on NHI, on our investment and our infrastructure. It is really a great thing, great day. मैं बहुत आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और ऐसा ही सपोर्ट आप सबका हमारे प्रोजेक्ट को और भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ऐसा ही मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने अपने बहुमोल विचारों की सौगात हमें दी, आपकी ओजस्वी वाणी से हमें उपकृत किया। हम आपके दिल की गहराइयों से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। I will now request Srimati Alka Upadhyay, Secretary, Ministry of Road Transport and Highways and Chairperson, NHAI, for her address. A very good morning to all of you. What a beautiful day to be here. Honorable Minister, Shri Nitin Gadkari ji, I think we are here today only because of him prodding us to go for the retail investment in our InvIT. Chairperson of the InvIT IEM, Shri B. Sriram, who and his board members who are also present over here have had innumerous meetings to make this a success. Shri S.S. Mundra, Chairman BSE, and without whom we would not have been over here. Mr. Jayashankar, Chairman IIFCL, Shri J. Swaminathan, Shri N.R. Kumar, Chairman LIC, my colleague on the dais, Mr. Rajen Kumar, and I must make a special mention, although I'm sure Mr. Goyal must be very happy with the kind words that Honorable Minister has bestowed on him, Mr. Suresh Goyal, the entire team of InvIT who have made this possible today over here. At the outset, I would just like to thank the vision of our Honorable Minister, who kept prodding us, who kept telling us that while InvIT is good, it's a very important milestone in terms of asset monetization, but he kept prodding us to get in the retail investors. We were kind of very convoluted. We had a lot of discussions, at times contradictions, and we thought this was not possible. But thank you, sir, for constantly guiding us, and we are here today. We know that the infrastructure in India in terms of roads is what it is because of our Honorable Minister, who has so much of experience that collectively putting the entire engineers ka forge, he has so much of wisdom and so much of knowledge even on the engineering side.
It has been a constant endeavor as far as the Ministry of Road Transport and Highways and NHAI to build world-class infrastructure. We have been trying to turn around the infrastructure in the country with the Greenfield Expressways. Honorable Minister has already spoken about it. So I would not be really talking much about this. But one aspect which is very important for you, me, and everybody in this room is the commuter satisfaction, and which leads to a very important point of operation and maintenance of the roads. So far, NHAI has done excellent work as far as engineering and construction of the roads is concerned. There have been some concerns about the O&M. And the other important aspect, of course, which came upon us was to monetize the assets that we have created in the form of these beautiful roads. I call them beautiful. I've spent almost 12 years now or 13 years doing different categories of roads, and I truly find the roads a very beautiful commodity now. Monetize the assets that we have created in the form of these beautiful roads. I call them beautiful. I've spent almost 12 years now or 13 years doing different categories of roads, and I truly find the roads a very beautiful commodity now. And as of now, it has become a it has become a very valuable commodity, and we are seeing so much of transactions over here. It has been a constant endeavor to improve the highway construction as well as operation and maintenance of these roads. But at the same time, we form 26% of the National Asset Monetization Plan. And I'm happy to share with you that with this second round of asset monetization, we are more confident, and we are very, very confident that our plan for asset monetization of roads is on the right track. Honorable Minister has also touched upon PTOTs, so that there is a different class, or there is a class of investor in each of these roads: retail, domestic, international, pension funds, the various institutions like LIC, ICICI, etc., and many of the bankers who have come on board with us to invest. And we will be carrying both of these streams together. I am also very happy to share with you over here that, and which has also been told by the Honorable Minister, that we got oversubscribed in a matter of 7 hours. And Mr. Goyal was here in Bombay at that point in time, and Mr. Sriram, and they were constantly giving the information that this is going in a very good fashion. We're all very thankful to all the investors who reposed their confidence in us. And I know there are a lot of people who are looking for further investments. I'm happy to share with you over here that we will be doing an even bigger round. And we hope to offer these roads. We've already offered these roads to the InvIT, and we hope to get the money and rather the investments by the month of February in this current financial year itself. The board, as you're all aware, is a very professionally run board with only 2 government nominees. So each one of the members who come here, they come with a large experience. Mr. Kharola, who's over here, I'm very fortunate to have him on this board as well. He did the biggest disinvestment in the form of the Air India, and we get to know a lot of details, how to move safely in this direction. And we, of course, we have other members also. I'm not taking their names for paucity of time, but due regards to each one of you. And sir, I would like to mention that this board very diligently, through numerous rounds of meetings, sometimes stretching the whole day and sometimes happening in 2 or 3 consecutive days, were making decisions very, very fast. Now it is upon us, the PMC or the IEM, in fact, to show that we will be able to take good care of the roads that we have taken on hand. And for this also, we plan to have a professional PMC. We already have some people in place, but we would like to have many of them
from the market, many of these people from the market who can give us this world-class experience. And I say all of this to just again repose the faith from the government side, from the ministry as well as from NHI, that your investments, we will try and keep them as safe and have a bigger multiplier effect or higher rate of return with the due diligence that we do in terms of performance of these roads. Ultimately, it will be the performance of the roads, the returns that the investors get, that will have a cyclical kind of an impact, and we all would be happy to offer this bond, the retail bond, to more and more investors. I would also like to compliment each one of you who are here in this room, and again, without taking names, who have been big supporters of us. We have the domestic pension fund, which is yet to come to us, but the biggest EPFO, which is yet to come to us, but there are so many pension funds which have come to us, both from the domestic as well as from the international markets, from various bankers, from various securities who have invested in us. I would also like to mention over here that we are at a high pace of construction. We are maintaining high pace of construction. The vision is to reach the levels of America in terms of greenfield expressways in a few years from now. The expressways that Honorable Minister has spoken of, we hope to complete many of them before time. And some of these roads which have already been constructed, which have already commenced operations, they are truly world-class. The kind of straight alignments, highway amenities, the speed, no tolling on the roadside, etc. All of these are our future things which we plan to span out across the country. So once again, thank you very much, ladies and gentlemen in this room, for making our presence over here and marking this beautiful day at the BSE Stock Exchange. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your valuable insights and progressive vision for the nation. I will now request Shri S.S. Mundra, Chairman, BSE, to address us all. Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, Madam Alka Upadhyay, Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, as also the Chairperson of National Highway Authorities of India, Shri B. Shriram, Chairman, NHI Infra Trust, Shri Rajendra Kumar, Member Finance NHI, Shri J. Swaminathan, MD State Bank of India, Shri P. R. Jayashankar, MD IFCL, Mr. M. R. Kumar, Chairman LIC, and oft-repeated Mr. Suresh Goyal, MD and CEO of InvIT. First of all, let me extend a warm welcome to all the dignitaries on the dais and all the esteemed members in the audience on this momentous occasion. सबसे पहले मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम New IHG One Rewards, 17 hotel brands, one loyalty program that lets you guest how you guest.